Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 24th of January. The session will be quite interesting students. In this video we will be talking about DIA scheme that will enhance the global competitiveness of the diamond sector. We are seeing that the artificial diamonds are also being now manufactured, and because of them the prices are being slashed. Next, we will be talking about Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. They have recently conducted India's first edible oil consumption survey. Next, we will be talking about Maritime Security Corporation. Next thing, we will be talking about Brand Finance Global 500 2025 report that has been recently released. Next thing, we will be talking about Moon, which has added to the list of the threatened cultural sites for the first time. Right. Next is India. India has joined the Eurodrone program as an observer state. What is this Eurodrone program? We will be discussing all these things in detail in this video. So students, stay tuned with us till the end. Also, if you are new to our channel students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise, they are uploaded regularly to give you a better insight about the learning of various topics. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. First we are talking about some cabinet approvals. Union cabinet is chaired by Prime Minister Narendra Modi and this is his third term. If we look at the topics here, first thing is he appraised of the achievements that comes under the National Health Mission from F 2021 to 2024, and he has also approved the continuation of the National Health Mission for next 5 years. Next thing is he approved the minimum support price of 5,650 rupees per quintal for raw jute for marketing season for FY26. This is an increase of nearly 6%, that is 350 rupees per quintal increased compared to the last marketing season. Correct? Take a note of this. If we talk about the National Health Mission here, we can see that National Health Mission provided engagement to around 2.69 lakh additional healthcare workers in FY22. Also, 90,740 community health officers were engaged here. Right? This framework has also played an instrumental role in strengthening the public health system, especially in the COVID-19 pandemic. Also, this was crucial in administering more than 220 crore COVID-19 vaccine doses between January 21 to March 2024. Apart from this, if we look at some of the key progresses that were made and various initiatives launched under this National Health Mission is, first is your Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. Right, TB is your tuberculosis, correct? So here it was launched in September 2022 and witnessed a registration of 1,56,000 Nikshay Mitra volunteers who have supported more than 9.4 lakh TB patients. Apart from this, Pradhan Mantri National Dialysis Program has also been expanded with more than 62.35 lakh hemodialysis sessions provided in FY24, which has also benefited more than 4.53 lakh dialysis patients. Correct? Next, moving on students, DOC, that is your Department of Commerce. This comes under the Ministry of Commerce and Industry, and they have introduced DIA scheme. DIA scheme is your Diamond Impressed Authorization Scheme that will enhance the global competitiveness of the diamond sector. But you need to understand students, now the artificial diamonds are now being made, right? And factory has been set up in Surat, Gujarat, right? These artificial diamond can be made just under 15 to 20
minutes, right? And it is expected that the price of these artificial diamonds, they are quite less compared to that of the diamonds that are found in nature, correct? So here Department of Commerce, they have introduced this diamond impressed authorization scheme. This will enhance the global competitiveness of India's diamond sector, and it will be implemented from 1st of April 2025. If we talk about this DIA scheme, it will offer duty-free importation of natural cut and polished diamonds weighing less than 1/4 carat, that is 25 cents, encouraging value addition and increasing export. Also, this scheme requires exports to have a 10% value added. Also, the diamond exporters with $15 million in annual export and 2-star export house status or higher are eligible to receive the benefits under this program. And validity of diamond impressed license will be 1 year for import and 18 months for the export. Next, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, they have conducted India's first edible oil consumption survey. This survey was on the MyGov portal, and it is to assess the edible oil consumption patterns across India. Here, this will address the absence of the recent data on the consumption pattern in India, which is the world's largest consumer as well as the importer of edible oils. Right here, 45-day questionnaire based survey was launched, and here we saw multiple data has been accumulated here. Now, how will this may benefit is we have the data. This data will be analyzed, and based on this data, steps will be taken that will help us to make sure that this consumption of this edible oil is not there. There is no reduction in this edible oil consumption, and whether if we are importing them more, right? So we are more and more importing. How we can reduce the imports and even make the products that are required for this edible oil in India itself. Right? So this initiative aims to support the effective implementation of National Mission on Edible Oilseeds. Next, also about India's first edible oil consumption survey, we just saw the survey aims to analyze the household consumption pattern, choices, preferences for edible oils, providing value insights. Also, it collects demographic data like your domicile and residence type and examines the oil usage patterns, including types of oil, deep frying frequency, seasonal variation, and many more. Moving on, next is India and France. They have strengthened the maritime cooperation in the Indian Ocean region, right? So our country India and France, right, they have strengthened their maritime security here. This was during the 7th India-France Maritime Cooperation Dialogue that was held in New Delhi. One more thing, remember, our country India is assuming the chair of Indian Ocean Rim Association for 2025, and this is for next 2 years. Next is international affairs. Brand Finance Global 500 2025. A report was recently published by Brand Finance. This is the 19th edition of the Global 500 2025 report. Correct? In this, if we talk about the most valuable brands globally, right, and strongest brands, let me show you a list that will give you a better insight, right? Or simply stands that in this rank, which is the company that secured the top position, right? So according to the Brand Finance report, that is the Global 500 report, Apple has retained the position as the world's most valuable brand, right? Apple is on the top position. Then Apple is followed by Microsoft on the second position, on Google on the third position respectively, right? Whereas WeChat has been ranked as the world's strongest brand for the second consecutive year, followed by Nike on the second spot, Google on the third spot. Also, USA has the greatest number of brands, that is 193 in the list, followed by China, Germany on second and third respectively. If we talk about top 5 most Indian valuable brands, on 60th position was Tata Group, on 132nd position Infosys, 164th HDFC Group, 177 LIC and 237 Reliance Group. Next is World Monuments Fund, right? This is a non-profit organization, and they have recently released 2025 World Monuments Watch List, right? This list includes 25 endangered cultural heritage sites that span across 29 countries and 5 continents. This year list has gone beyond the usual landmarks such as your temples or cemeteries. The interesting thing here is that this is the moon that has been recently added to the threatened cultural site lists for the first
time. Take a note of this, very interesting, right? Moon has been added to the World's Monuments Fund list, right? That is the threatened cultural sites list. Moving on, next is India has officially joined the Eurodrone program as an observer state. Now, what is this Eurodrone program? Right, first thing you need to understand this. This project was basically involving 4 countries, that is Germany, France, Italy, and Spain. This was launched in 2016, correct, and this is valued at around $7.3 billion. Correct. Now this Eurodrone is designed for long endurance mission. Correct. This is a remotely pilot aircraft system. This will include surveillance, reconnaissance mission, maritime monitoring, anti-submarine warfare, right? And it is designed to work in all weather conditions, where it is equipped with the twin engine setup also. Correct. So this is your Eurodrone program, and recently our country India has officially joined this Eurodrone program as an observer state. Correct. Now, with India granted the access to technical data and the ability to place orders for the aircraft, they are not involved in the decision-making process regarding the platform's design, development, or distribution of work share among the participating countries. Next is Skydo. They have received in principle approval from RBI to act as a payment aggregator for cross-border payments, right? So directly remember, it is Skydo Technologies Private Limited, right? It is Bengaluru, Karnataka based, and they have received this in principle approval from RBI to act as a payment aggregator cross border. Correct. Also remember one more thing, that Skydo, it is among the first in the cross border payment industry to receive the RBI's approval. Next is appointments and resignation. Alok Kumar Agarwal has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Zurich Kotak General Insurance. I repeat, Alok Kumar Agarwal, as you can see here, he has been appointed as MD and CEO of Mumbai, Maharashtra based Zurich Kotak General Insurance Company. Right. Next is science and technology. Digantara, right? As you can see, Digantara launches the world's first commercial satellite SCOT for advanced space monitoring. So name of this satellite here is SCOT. Who launched it? It was launched by Digantara, right? It is Bengaluru, Karnataka based company that is backed by Aditya Birla Group and SIDBI, and they have launched this SCOT. SCOT is your space camera for object tracking. This is the world's first commercial satellite that has been launched, and it has been launched for space monitoring. This satellite was launched using the SpaceX Transporter 12 mission from Vandenberg Space Force in California, USA. Moving on, next is XDLINX, right? Space, they have launched the Elevation 1 satellite. I repeat, XDLINX Space Labs, they have launched recently Elevation 1 satellite that carried the world's first E-band communication payload. Correct. And this will push the data rates into 10 Gbps regime. Correct. So remember this also. Other was Digantara. They have launched this SCOT. And what is SCOT? SCOT is your space camera for object tracking, and it is a space monitoring satellite that was launched. Next students, DRDO, they have carried out the test for the India's first scramjet combustor for hypersonic technology. I repeat, DRDO, that comes under the Ministry of Defense, they have carried out a ground test of an active cooled scramjet combustor that lasted 120 seconds, making it first for India. And this is a part of India's effort to develop hypersonic technology that is powered by supersonic combustion ramjets. This will be developed, or this technology has developed by Defense Research and Development Laboratory based in Hyderabad, Telangana, and it is a part of DRDO only. Next is Mumbai Marathon 2025 was held, and Berhin, Tesfaye and Joyce has won the men's and women's elite race respectively. Correct. So directly remember, this is the 20th edition of Mumbai Marathon, which is World Athletes Gold Label road race event organized by Procam International Private Limited, and recently it was held in India, and the top 3 finishers in both men and women elite section received a prize money of $50,000 US, $25,000 and $15,000 US respectively. Next is Ballon d'Or winner Dennis Law has recently passed away at the age of 84, correct, in Scotland. He was born in 1940, and he is the only Scottish player to win both Ballon d'Or and the European Player of the Year award in 1964.
Next is important day, students. It is your Prakram Divas observed on 23rd of January. It is to commemorate the birth anniversary of the Indian freedom fighter, that is Subhash Chandra Bose ji, as you can see him in the picture, famously known as Netaji. And this year it was 128th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose observed. Also, the first ever Prakram Divas was celebrated in 2021, right? And this day, right, as I mentioned, it is to honor the contributions of Netaji to the India's independent movement. Next is in Kois, Hyderabad. They have been awarded with the Subhash Chandra Bose Abda Prabandhan Puraskar 2025. So directly remember who has been honored or awarded with the Subhash Chandra Bose Abda Prabandhan Puraskar 2025. It is in Kois, Hyderabad. That is Indian Naval Center for Ocean Information Services. Next is state news, students. Kerala state, they have launched Kavacham, India's first fully integrated disaster risk warning system, right? Kavacham system, correct? That is Kerala Warnings Crisis and Hazard Management System. That is India's first fully integrated disaster warning system. It was launched at the Kerala State Disaster Management Authority in Trivandrum, Kerala. Correct? Take a note of this. This disaster warning system features a network of 126 siren light units and 93 emergency operation centers. Currently, 91 sirens are installed as a part of the first phase and rest will be installed soon. Also, this system will deliver timely alerts on the extreme weather events including heavy rain, strong winds, sea surge, many more. Correct? If we talk about Kerala, who is the Chief Minister of Kerala? Pinarayi Vijayan. Next is Tripura gets the new state emblem with the approval of Ministry of Home Affairs, right? So who is the Chief Minister of Tripura? Manik Shah, as you can see him in the picture, has recently got the approval, right? And it is for the new state emblem, right? This proposal of the state emblem of the government of Tripura has examined by the rule 4 part 2 of the state emblem of India regulations of 2007. So just remember, new state emblem of which state has been launched? It is of Tripura. Next is appointments of the new Chief Justice for Delhi and Bombay High Court, right? So recently, the oath of office was administered by Lieutenant Governor Shri Vinay Kumar Saxena, right? Who we are talking about here, right? We are talking about Justice Alok Aradhe was sworn in as the Chief Justice of Bombay High Court, right? Justice Alok Aradhe, right? Take a note of this, important, right? And he was sworn in as the 48th Chief Justice of Bombay High Court. Correct? Take a note of this. And he succeeded whom? He succeeded. One more thing. Then Justice Devendra Kumar Upadhyay was sworn in as the 33rd Chief Justice of Delhi High Court. For Mumbai High Court, Justice Alok Aradhe, and for Delhi High Court, Justice Devendra Kumar Upadhyay was sworn in as the 33rd Chief Justice of Delhi High Court. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next, name the portal that was recently launched by Union Minister Amit Shah, who is the Union Minister of Home Affairs or who is the Minister of Home Affairs and Ministry of Cooperation to revolutionize the international crime investigation. So, the portal that has been launched here is Bharat Pol, right? This is a portal that was launched during an event that was held at Bharat Mandapam in New Delhi. Also, Amit Shah has awarded 35 CBI officers and officials with the President's Police Medal for Distinguished Service. Apart from this, the portal here, this Bharat Pol, which is a portal that was developed by CBI that will aim to streamline the process for the law enforcement agencies. Next, which state has recently become the first state in India to introduce an innovative plan that connects the ecosystem service of its forest with green gross domestic product? So, which state? It is Chhattisgarh. Right, this initiative is directly linked to the environmental contributions of forests like clean air, water conservation, biodiversity and state's economic progress. Also, if we talk about Chhattisgarh, here the forest cover is almost 40% of the land area. Right, this action plan will seek balance between economic growth and environmental conservation to protect the ecosystem for the future generations. Next, which country and India has recently held their first security dialogue in New Delhi to enhance the bilateral cooperation? It was between India and Sri Lanka, right? And this was the first India-Malaysia security dialogue that was co-chaired by the National Security Advisor of India, that is Ajit Doval, and similarly Malaysia's Director General.
Next, which of the following points are correct with respect to the test series to win the Border Gavaskar Trophy held between India and Australia in January 2025 in Sydney, Australia? This is the location where this was held. So if we look at the option, which among the following are right? Option A and option C are right, B is wrong. B is saying that R. Ashwin, that is Ravichandra Ashwin, was awarded with the Player of the Series title as he emerged as the highest wicket taker of the tournament with 32 tickets. Is it correct? So remember, not Ravichandra Ashwin, who was termed as the awarded with the Player of the Series. He will be Jasprit Bumrah, right, with 32 wickets. Rest all are right, and Australia has beaten India by 3-1 in a 5-test match series. Next, which insurance company has recently won the runner-up title for the most effective insurance penetration at the ASSOCHAM 16th Global Insurance Summit and Awards 2024? So, which is that insurance company? It is Star Health and Allied Insurance Company Limited. Correct? They have won the runner-up title for the most effective insurance penetration at the ASSOCHAM 16th Global Insurance Summit and Award. Next, which bank has recently become the first domestic bank to execute a gold forward deal with from GIFT City in Gujarat? So, which is that bank? It is HDFC Bank, and they became the first domestic bank to execute a gold forward deal, and it was from GIFT City, Gujarat. Right? This transaction was conducted by the Banks International Union Unit, Banks International Banking Unit, that is at GIFT City in collaboration with Hindustan Platinum. Next, which Indian company has recently partnered with Ultra Maritime to supply and manufacture sonobuoys for the US Navy standard for the Indian Navy? Right? These sonobuoys, right? For this, the contract has been signed by Bharat Dynamics Limited. Bharat Dynamics Limited, it is Hyderabad based. It is Indian Defence Public Sector undertaking, and they have partnered with Ultra Maritime of USA based leading global provider of undersea warfare system to supply and manufacture these sonobuoys of US Navy standard to the Indian Navy. Next, what is the coverage amount per person under the upgraded cashless treatment scheme for road accident victims recently announced by Union Minister Nitin Gadkari ji? So, what is the cover here? It is 1.5 lakh rupees, right? It is 1.5 lakh rupees per person per accident for a maximum of 7 days, provided that the accident is reported to the police within 24 hours. Also, in case if the person is deceased, his family will be receiving a compensation of 2 lakh rupees here. Next, which ministry has recently partnered with various Indian institutes of technology for skill development in semiconductor manufacturing? It is MEITY, that is Ministry of Electronics and Information Technology. Right, take a note of this. Here, USA based software tech giant Microsoft Corporation, they have signed this MOU with MEITY, that is under the India AI mission that aims to provide skill development training to more than 5 lakh students, teachers, professionals in artificial intelligence by 2026. Next, which of the following has recently partnered with New Shop, a 24/7 convenience retail chain, to launch the Empower Her Biz Sapno Ki Udan project to empower women entrepreneurs? So this Empower Her Biz, it was launched by which of the following organization partnered with New Shop 24/7? It is Women Entrepreneurship Platform, right? This WEP, they have partnered with New Shop 24/7. What is this New Shop? Basically, this is the shop or retail outlet that works 24/7 even at night, and you can go and purchase things there, right? As this will be empowering the women entrepreneurs. Here, women that are aged between 18 to 35 years of age will be selected through an online application progress and will help them to grow. Even this fees for these retail shops will not be taken from them. Next, which of the following are correct with respect to the annual edition of Henley and Passport Index for 2025 released by Henley and Partners? If we look at the option A and C are right, B is wrong. B is saying that India ranked 80th spot in the Henley Passport Index 2025 with visa-free access to only 57 destinations worldwide. Is it correct? So no. What is the rank of India? India rank dropped from 80th spot to 85th spot. So now it is 85th, right? And we are having access to
57 countries visa free. Next, RBI, they have recently introduced a new credit reporting rule mandating that all lender update credit bureau records every 15 days, effective from 1st of Jan to 2025. Correct, take a note of this. Next, who was recently appointed as the 11th chairman of ISRO and secretary of Department of Space by the Government of India. So who is the new chairman of ISRO? V Narayanan, right? And he is the 11th chairman of ISRO. He will be succeeding whom? He will be succeeding S Somnath, and his term will be of 2 years. Next, which country has recently become a super aged society with 20% of its population aged 65 year or older? It is South Korea. Next, recently, India extended the deadline for duty-free imports of dash product until Feb 2025. So recently, India extended the deadline for the duty-free imports of yellow peas until Feb 2025. Next, which of the following are correct with respect to Prime Minister Narendra Modi's visit to Andhra Pradesh and Odisha for launching infrastructural projects worth 2.5 lakh crore rupees? If we look at the options here, option B and C are right. A is wrong. A is saying that PM laid the foundation stone and inaugurated various railway and road projects worth 19,500 crore rupees in Odisha. Is it correct? So all these things are right. Just remember here, these projects that we are talking about, right, in Andhra Pradesh and Odisha, correct? So they were not in this 19,500 crore rupees railway and road projects, not in Odisha but in Andhra Pradesh. Then first green hydrogen hub under National Green Hydrogen Mission was launched in Andhra Pradesh, right? Next is, which of the following are correct with respect to the Unnat Jyoti by Affordable Light Emitting Diode Scheme for all, that is Ujala scheme, and Street Lighting National Program as of January 2025? If we look at the options, all these three options are rightly mentioned here. Next, which edition of the National Program for Organic Product was recently launched by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal at the National Agriculture Science Complex in Pusa, New Delhi? Which is the edition it is asked, right? Which edition of this program was launched? It was the 8th edition of this program was launched in Pusa, New Delhi. Correct, take a note of it. Next, okay, here one more thing, remember, during this event Piyush Goyal also launched TraceNet 2.0. This is an organic promotion portal, right? And this is an upgraded online organic traceability system for seamless operations and improved tool for regulatory oversight. Next, which organization recently approved $35 million loan for Meghalaya multi-sectoral project for adolescent well-being, empowerment and resilience, that is Empower, to enhance education quality in Meghalaya? So direct question, that Empower was launched by which organization to enhance the education quality in Meghalaya? It is World Bank that has launched this Empower, right? And this will target the students between 6th to 12th grade. Moving on, which organization has recently approved $21.28 billion loan, 21.28 billion rupees loan for GMR Smart Electric Distribution Private Limited to implement smart meters across Uttar Pradesh? It is IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency Limited. And here this GMR Smart Electric Distribution Private Limited, they will operate and maintain smart meters under a 10-year contract with the distribution companies. Next, who has been recently appointed as the chairperson of Athletics Federation of India's Athletics Commission? So Anju Bobby George has recently been appointed as the chairperson here of this Athletics Federation of India's Athletes Commission. Next, sixth and the final Scorpion class submarine Dash under project P75 was delivered by Madgaon Dock Shipbuilders Limited to the Indian Navy on 9th of January 2025. What is the name of that sixth and final Scorpion class submarine? It is INS Vagsheer, right? This is the name of this Indian naval ship. Next, National Film Awards P. Jayachandran recently passed away. He was a renowned what? He was a renowned singer who recently passed away. Next,
Parvasi Bharati Divas, also known as the NRI Day, is celebrated every 2 years on 9th of January. Who recently presented the Parvasi Bharati Divas Samman Awards, the highest honor for the overseas citizens. So this award is presented by the President of India, Draupadi Murmu ma'am. This Parvasi Bharati Divas is generally observed because remember in 1915 on 9th of January, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa. Next, which company recently launched two schemes, BSE Sensex Next 30 Index Fund and ETF as a part of its new investment opportunity? So, which company is it? It is DSP Asset Managers Private Limited. And this NFO for these schemes will be open from 10th of January and will be closing on 24th of January. Next, Grow Mutual Fund Asset Management Limited. They have recently launched India's first Grow Nifty Indian Dash Public Sector Undertaking Index Fund and Exchange Traded Fund. So it has been launched for the railway sector recently, right? All the companies related to the railway sector will be included in this fund. Next, which of the following are correct with respect to the UNDESA, that is United Nations Department of Economic and Social Affairs recent report titled World Economic Situation and Prospectus 2025? If we look at the options, option B and option C are right. A is saying that the report forecast Indian economy to grow by 6.8% in 2025, primarily fueled by robust private consumption and investment growth. So if we look at the option here, option A is wrong, but the right option will be that the forecast projects that Indian economy is expected to grow by how much in 2024, right? So see, 6.8 was registered in 2024. If we are talking about 2025, it is expected that India will be growing by 5.7% and 6% in 2026. Correct? Next is which beaches in Kerala were recently awarded the Blue Flag certification by the Foundation of Environmental Education. See, this Blue Flag certification, this certification is given to various beaches for their conservation efforts to protect the marinas, to protect the ecosystem there, biodiversity there, right? So for that conservation, here this Blue Flag certification is there so that we can protect our blue economy. Correct? So recently it was Kappad and Chal beaches. These beaches are where they beaches are in Kerala and they were awarded with this Blue Flag certification. Next, who has recently assumed the office as the 53rd president of Venezuela for the third consecutive term on 11th of January 2025? So, Nicolas Maduro Moros has recently assumed as office as the 53rd president of Venezuela for the third consecutive term. Next, who was recently elected as the 14th president of Lebanon, succeeding the former president Michael Nam On, whose term ended in October 2022. So, Joseph Khalil On has been elected as the 14th president of Lebanon. Next, which company has recently collaborated with Korea-based SII's Corporation Limited to supply hyperspectral satellite data in South Korea? So, which is that company? It is Pixel. Take a note of this. Bengaluru, Karnataka-based Pixel, a space technology startup, right? They are specialized in hyperspectral Earth imaging technology, and they have partnered with this Korean company to supply hyperspectral satellite data in Korea. Next, also one more thing, remember here Pixel, they are set to launch their Fireflies constellation, right? This is a constellation, it is a group of 6 commercial grade satellites. Next, National Road Safety Week has been observed from 11th to 17th of January every year across India, organized by the Ministry of Road Transport and Highways. Right, and this is the 36th edition of the National Road Safety Week observed. Theme here, remember, theme being Be a Road Safety Hero. Next, UNESCO has recently collaborated with Dash to preserve the vanishing languages in India. So, UNESCO collaborated with Indira Gandhi National Center for Arts to preserve the vanishing languages in India. Next, which bank has recently announced as the special partner for the Dadasai Phalke International Film Festival Award in 2025? This will be your Punjab National Bank. Next, in January, India became a member of which UN organization? So, India became a member of United Nations Committee of Expert on Big Data and Data Science for Official Statistics.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स होमवर्क पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो के नए चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं, नाम बताओ एंड नंबर बताओ, वो कौन से नंबर के चीफ रहेंगे इसरो के। देन इसके बाद बताओ किनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है एंड बीसीसीआई का ट्रेजरर कौन अपॉइंट किए गए हैं, इन दोनों का नाम बताओ और ये दोनों किनको सक्सीड करेंगे वो भी नाम बताओ। फिर इसके साथ बताओ कौन सा एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस अभी हमने ऑब्जर्व किया, कब ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी डेट बताओ, डे का डेट बताओ एंड क्यों ऑब्जर्व किया जाता है वो बताओ। राइट, तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मैक्स टू मैक्स लाइक चाहिए मुझे आज की वीडियो में एंड मैक्स टू मैक्स कमेंट चाहिए। जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी बच्चे होमवर्क क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करा करो। बहुत अच्छा सेशन हम डेली बेसिस पे लेते हैं, सारी न्यूज़ हम डेली बेसिस की कवर करते हैं जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीआईए स्कीम के बारे में जो डायमंड सेक्टर से रिलेटेड है। देन हम बात करेंगे इंडिया के पहले एडिबल ऑयल कंजप्शन सर्वे जो अभी कंडक्ट कराया गया था। देन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक कॉपरेशन साइन किया गया इन द इंडियन ओशन रीजन। राइट, देन हम बात करेंगे ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ग्लोबल 500 रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। बेसिकली ये डाटा और रिपोर्ट आती है जो कि ब्रांड्स की स्ट्रेंथ एंड ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी, ब्रांड्स कितना स्ट्रांग है उसके बारे में बताती है। देन WMF 2025 की वॉच लिस्ट ने अभी ऐड किया मून को टू द लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स। ये इंटरेस्टिंग रहेगी, इसको नोट करके चलेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हमारी कंट्री ऑफिशियल मेंबर बन गई है यूरोड्रोन प्रोग्राम की एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। यूरोड्रोन प्रोग्राम क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, कौन इसके मेंबर्स हैं एंड इंडिया से इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो सुबह हम डेली 5 बजे डेली करंट अफेयर्स अपलोड कर देते हैं। देन वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम कैबिनेट अप्रूवल्स की बात करेंगे। यूनियन कैबिनेट चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उनके द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन काफ़ी अच्छा इसने रिस्पांस देखने को मिला है 2021 से 2024 के लिए, तो इसको कंटिन्यू किया गया है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। दैन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था आपका रॉ जूट का फॉर FY26 वो 5,650 रुपये पर क्विंटल किया गया है, जिसमें 6% का हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 315 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, फिर एक चीज़ और, जो ये नेशनल हेल्थ मिशन है ना, बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। इंडिया में 2.69 एडिशनल हेल्थ वर्कर्स का एंगेजमेंट रहा एंड 90,740 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पे एंगेज रहे इसमें। कोविड-19 के टाइम पे भी इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिला वैक्सीन के तौर पर, राइट, एंड जनरली भी, राइट, इससे काफ़ी ज़्यादा हमें इंडिया में बेनिफिट देखने को मिल रहा है एंड लोगों की मदद की जा रही है यहाँ पे, करेक्ट। जैसे अगर हम बात करें, इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए थे, जैसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था एंड एम क्या था यहाँ पे कि टीबी को एलिमिनेट करता है हमें इंडिया से। देन था प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये किडनी डायलिसिस के लिए होता है बेसिकली, तो उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ पहुँचाने के लिए, राइट, उनकी हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली डीआईए स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये डीआईए स्कीम लॉन्च करी है जो कि है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। इससे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट्स में राइट हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको ये जो स्कीम है राइट, ये डीआईए स्कीम ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी 2025 में। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स आजकल जो आर्टिफिशियल डायमंड्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं, राइट। गुजरात में इसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई है। एंड ये जो आर्टिफिशियल डायमंड्स होता है ना 15 से 20 मिनट में आपका एक आर्टिफिशियल डायमंड बन जाता है। ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नेचुरल डायमंड। एंड इससे जो ओरिजिनल डायमंड्स होते हैं राइट, उनकी भी प्राइस में यहाँ पे काफ़ी घटोतरी देखने को मिल रही है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो डीआईए स्कीम है ये ऑफर करती है ड्यूटी फ्री इंपोर्टेशन ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स, जिसका 1.5 कैरेट रहेगा। यहीं पे जो स्कीम है ये रिक्वायर करती है एक्सपोर्ट्स टू हैव अ 10% वैल्यू एडेड एंड ऑल डायमंड एक्सपोर्टर्स विद $15 million इन एनुअल एक्सपोर्ट्स एंड 2-star एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस, उनको बेनिफिट्स मिलेगा अंडर दिस प्रोग्राम। ऑल्सो जो वैलिडिटी है इस डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस की ये 1 साल की रहेगी इंपोर्ट के लिए एंड 18 महीने की रहेगी, मतलब 1.5 साल की रहेगी फॉर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने कंडक्ट करा इंडिया का पहला एडिबल ऑयल कंजप्शन सर्वे, राइट। इससे क्या होगा, हमें एक डाटा मिलेगा कि इंडिया में जो हाउस होल्ड है वो कितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सा एडिबल ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बेसिस पे, क्योंकि देखो हम इसको इंपोर्ट कराते हैं एडिबल ऑयल को लार्ज क्वांटिटी में, तो क्यों ना जो चीज़ हम इंपोर्ट करा रहे हैं और इंडिया में इतनी सारी जगह है, क्यों ना हम ऑयल को यहाँ पर इंडिया में ही इसको प्रोडक्शन कर सकें, इसकी एडिबल ऑयल्स की इंडिया में ही प्रोडक्शन को ग्रो किया जा सके। इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा एंड इंडिया को जो प्रोडक्ट है इंडिया के लोगों को भी यहाँ पे रोजगार देखने को मिलेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये सर्वे कंडक्ट कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। पहली बार ऐसा सर्वे कंडक्ट कराया गया है, माई गव पोर्टल पे इसको कंडक्ट कराया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड फ्रांस, इनके द्वारा भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ये मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन का एग्रीमेंट रहेगा इन द इंडियन ओशन रीजन। एक और चीज़ याद रखेंगे, हमारी इंडिया 2025 में चेयर होगी इंडिया के पास फॉर IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, राइट। और आने वाले 2 सालों के लिए यहाँ पर इंडिया के पास ये चेयर रहने वाली है, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ इट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स पर इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 ये लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें वर्ल्ड के टॉप एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड का डाटा यहाँ पे रिलीज किया जाता है, लिस्ट रिलीज की जाती है। वर्ल्ड का जो टॉप का स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप पे आया वो है एप्पल। एप्पल ने यहाँ पे ग्लोबली टॉप किया, राइट, विद अ वैल्यू ऑफ $574.5 बिलियन, करेक्ट। एंड यहीं पे अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। लेट मी शो यू ओनली, एप्पल फर्स्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पे, गूगल थर्ड पे रहा। अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करूँ तो वीचैट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रहा, फॉलोड बाय नाइकी एंड गूगल ऑन द थर्ड पोजीशन। एंड यूएसए में सबसे ज़्यादा ब्रांड्स हमें देखने को मिले 193, फॉलोड बाय चाइना एंड जर्मनी ऑन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। इंडिया के ब्रांड्स की बात करूँ तो 60वें पोजीशन पे टाटा ग्रुप, 132वें पे इन्फोसिस, 164 पे HDFC ग्रुप, 177 पे LIC एंड 237 पे रिलायंस ग्रुप आता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है WMF's 2025 वॉच लिस्ट एडेड मून टू द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 2 इंडियन साइट्स आर ऑन द लिस्ट। देखो यहाँ क्या है बेसिकली आपका WMF क्या है आपका वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, राइट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनके द्वारा भी 25 एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से एक इंटरेस्टिंग है कि मून को भी यहाँ पे थ्रेटेंड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स की लिस्ट में इसको ऐड किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड 2 इंडियन साइट्स को फ्रॉम इंडिया ऐड किया गया है। एक है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम जो कि गुजरात में है एंड दूसरा है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग जो कि तेलंगाना में रहेगा, राइट। तो एक गुजरात से एक तेलंगाना में, ये 2 चीज़ भी यहाँ पे ऐड की गई है इस लिस्ट में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया यूरोड्रोन प्रोग्राम को एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। देखो ये यूरोड्रोन प्रोग्राम क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो ये देख लो। यूरोड्रोन प्रोजेक्ट ये स्टैब्लिश किया गया था 2016 में 4 कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन के द्वारा। $7.3 बिलियन यहाँ पे लागत है इस प्रोजेक्ट की। एंड इसका बेसिक एम क्या है कि जो आपके रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है ना, राइट, उनको यहाँ पे डेवलप करना, जिससे सर्वेलेंस बेटर हो सके, आपके मैरीटाइम मॉनिटरिंग हो सके, एंटी सबमरीन वॉरफेयर यहाँ पे मिशंस को लॉन्च किया जा सके एंड ऑल वेदर कंडीशंस में ये इजीली वर्क कर सके, राइट। तो इंडिया अब यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट बन गया है। इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, इंडिया को टेक्निकल डाटा मिलेगा यहाँ पर, ताकि उस डाटा को एनालिसिस करके बेटर अपने
टेक्नोलॉजीज को ग्रो कर सके। यहाँ पे वो ऑर्डर्स कर सकेंगे प्लेस फॉर द एयरक्राफ्ट, बट डिसीजन मेकिंग में इनकी कोई भी योगदान नहीं रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्काइडो। इन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। मतलब क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट्स हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के बीच में मर्चेंट्स यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर पाएंगे एंड पे कर पाएंगे। इसका अप्रूवल मिल गया है आरबीआई के द्वारा किसको, स्काइडो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कंपनी रहेगी बेस्ड आउट ऑफ इन बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट आ जाते हैं आलोक कुमार अग्रवाल। इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस का। टेक अ नोट ऑफ दिस, ये अभी नए अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक के ऊपर, दिगंतरा, राइट। दिगंतरा इनके द्वारा वर्ल्ड का पहला कमर्शियल सैटेलाइट SCOT को लॉन्च किया गया फॉर स्पेस मॉनिटरिंग। ये सबसे पहले SCOT क्या है, ये है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सैटेलाइट, राइट। ये आपका बेसिकली यूज किया जाएगा ताकि सर्वेलेंस को बढ़ावा दिया जा सके, राइट। इवन यहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं, राइट, वो कोलाइड ना कर सकें दूसरी सैटेलाइट से। इवन जो स्पेस डर्बीज है उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके, सैटेलाइट के ऊपर नज़र रखी जा सके, राइट। तो स्पेस मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर ये SCOT को लॉन्च किया गया दिगंतरा के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था यूजिंग स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के थ्रू फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स स्टेशन इन कैलिफोर्निया USA, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा XD लिंक, राइट, XD लिंक इनके द्वारा, XD लिंक स्पेस लैब्स के द्वारा एलिवेशन सैटेलाइट 1 भी लॉन्च की गई, जो कि वर्ल्ड की पहली ई बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 10 Gbps यहाँ पे डाटा का ट्रांसमिशन स्पीड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर DRDO कैरियर्स आउट द टेस्ट ऑफ इंडिया की पहली स्क्रैमजेट कंबस्टर फॉर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये ग्राउंड टेस्ट अभी कंडक्ट कराया गया है स्क्रैमजेट कंबस्टर का, जो कि 120 सेकंड तक रहा, राइट। एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट फॉर इंडिया, राइट। इससे जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हम डेवलप करने की चाहते हैं, राइट, उसके ऊपर जो वर्क कर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली। ये DRDL क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये DRDO का ही पार्ट है। इनके द्वारा यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं मुंबई मैराथन। मुंबई मैराथन एक काफ़ी बड़ा इवेंट था, ये इसका 20वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला था। एंड यहाँ पर बारहेन टेस्फी, राइट, ये यहाँ पे मेंस कैटेगरी में, एंड जॉयस चेपन की टेल वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे विजेता रहे फॉर दिस एलीट रेस, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी, राइट। टाटा मुंबई मैराथन 2025 टाटा के द्वारा इनको स्पॉन्सर किया गया था। तो यहाँ पे ये वो विनर रहेंगे इन मेंस एंड वीमेंस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आ जाते हैं बैलन डी'ओर विनर डेनिस लॉ, इनका रिसेंटली निधन हो गया है, राइट। काफ़ी फेमस ये फुटबॉल प्लेयर थे। 1940 की एज में इनका जन्म हुआ था एंड 84 की एज में इनका निधन हो गया अभी। एंड ये ओनली स्कॉटिश प्लेयर थे जिन्होंने को बोथ बैलन डी'ओर एंड यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था 1964 में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर स्टूडेंट्स। पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 23 जनवरी को, एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द सुभाष चंद्र बोस जी। आप जैसे इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको नेताजी के नाम से भी जानते थे। एंड इस साल हमने इनका 128 बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया। ऑल्सो इनका जो एफर्ट था, राइट, इंडिया के इंडिपेंडेंस में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार पराक्रम दिवस 2021 में ऑब्जर्व किया गया था, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अभी इनकॉइस हैदराबाद, इनकॉइस क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट। इनको यहाँ पे, ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड है, इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से, राइट, कि मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। केरला ने लॉन्च किया क्वच्छम, इंडिया की पहली फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम। ये क्या है, बेसिकली कोई भी, जैसे मान लो हैवी रेनफॉल हो गई या बाढ़ आ गई या सी लेवल बढ़ गया, राइट, तो कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो इस ऐसे टाइम पे पहले ही वार्निंग प्रोवाइड की जा सके। डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है ये, कि कोई भी डिजास्टर आए उससे पहले ही यहाँ पे केरला के लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये है कवचम। कवचम क्या है, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, करेक्ट। इसको डेवलप किया गया है केरला की स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, एंड इसको लॉन्च किया गया था एट द केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन त्रिवेंद्रम, केरला। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अपना जो स्टेट एम्बलम है उसको चेंज कर लिया है विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। इनको अभी अप्रूवल यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो नया स्टेट एम्बलम रहेगा एंड इसको अभी यहाँ पे चेंज कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट के द्वारा अभी नया स्टेट एम्बलम लॉन्च किया गया, तो वो है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह रहेंगे।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एक और, अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। दिल्ली के 33rd चीफ जस्टिस कौन बने हैं? वो हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये सक्सीड करेंगे विभू बकुरु को, राइट। एंड एक और चीज़, इनकी जो ओथ होती है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, वो है विनय कुमार सक्सेना जी। फिर इसी के अलावा हमने बात की फॉर बोथ दिल्ली एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन अपॉइंट किए गए हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस आलोक अराधे, राइट। आलोक अराधे ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने इंडिया के साथ अभी पहला सिक्योरिटी डायलॉग होस्ट किया न्यू दिल्ली में, ताकि बायलैटरल कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ये पहला सिक्योरिटी डायलॉग हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई, लोकेशन याद रखेंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, बिल्कुल सही। ऋषभ पंत इन्होंने स्मैश किया फास्टेस्ट टेस्ट हाफ सेंचुरी इन जस्ट 29 बॉल्स, ये भी बिल्कुल सही। बी ऑप्शन कह रहा है रविचंद्र अश्विन, इनको अवार्ड किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज से, तो नहीं, रविचंद्र अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं थे, जसप्रीत बुमराह यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, राइट। और इन्होंने 32 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर बने टूर्नामेंट के। अब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी रिसेंटली जीता रनर अप टाइटल फॉर मोस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एट एसोचम 16th ग्लोबल इंश्योरेंस समिट एंड अवार्ड 2024 के लिए। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे जीता? तो वो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली वो पहला डोमेस्टिक बैंक बन गया जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम जिप सिटी गुजरात। ये गोल्ड फॉरवर्ड डील क्या है कि अदर प्योरिटी मेटल्स के लिए, प्रीशियस मेटल्स के लिए यहाँ पे गोल्ड इनको दिया जाएगा। तो ये HDFC के द्वारा पहला डोमेस्टिक बैंक बना, HDFC बैंक, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया ये गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम जिप सिटी गुजरात। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है अल्ट्रा मैरिटाइम के साथ टू सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर सोनू बॉयज ऑफ द US स्टैंडर्ड, करेक्ट, इंडियन नेवी के लिए। तो ये सोनू बॉयज, राइट, कौन सी इंडियन नेवी रहेगी, कंपनी रहेगी? वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। ये इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ? अल्ट्रा मैरिटाइम के साथ, ताकि सोनू बॉयज को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द कवरेज अमाउंट पर पर्सन अंडर द अपग्रेडेड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स रिसेंटली अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। तो 1.5 लाख रुपए पर पर्सन पर एक्सीडेंट यहाँ पे दिया जाएगा विद अ हॉस्पिटल कवरेज ऑफ अप टू 7 days। यहाँ पे शर्त क्या रखी गई है बस, कि अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको विद इन 24 hours। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया वेरियस IITs के साथ फॉर स्किल डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए? कौन सी मिनिस्ट्री ने, MEITY ने ये पार्टनरशिप करी है, राइट, विद वेरियस IITs, जैसे IIT इसमें, करेक्ट। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली पार्टनर्ड विद न्यू शॉप? ये 24/7 एक रिटेल आउटलेट है, राइट। ये कन्वीनियंस रिटेल चेन रहेगी। इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एम पावर बिज, जो कि सपनों की उड़ान प्रोजेक्ट है, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में मदद की जा सके। तो किसने रिसेंटली पार्टनर किया न्यू शॉप के साथ? वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे टाइप किया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे 18 से लेके 35 साल की जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ ग्रो करने में हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया, राइट। तो सिंगापुर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा विद 195 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस, बिल्कुल सही। बी आ जाता है, इंडिया की रैंक रही 80th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, नहीं, 80 तो पिछले साल थी, अब ये गिर के 85 हो गई है, एंड 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री था। तो ये बी ऑप्शन से गलत था, जो हमने 85 करके सही कर दिया है, एंड सी ऑप्शन भी आपका ठीक है। अब तीनों ऑप्शन ठीक हो गए हैं। नेक्स्ट, RBI ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल मैंडेटिंग कि ऑल द लेंडर्स अपडेट देयर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स एवरी 15 days इफेक्टिव फ्रॉम व्हेन। ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट, किन्होंने हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
तो किनको अपॉइंट किया गया है, वी नारायणन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये 11th चेयरमैन बने हैं इसरो के, ये सक्सीड करेंगे एस सोमनाथ को एंड 2 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली या फिर विच कंट्री रिसेंटली बिकेम सुपर एज सोसाइटी, जिसमें 20% से भी जो पॉपुलेशन है वो 65 साल से ओल्डर है, तो यह है साउथ कोरिया। देखो यंग जनरेशन का होने का बेनिफिट होता है, राइट। जैसे इंडिया है, इंडिया में अभी यंग पॉपुलेशन है, इसलिए इंडिया की जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है ना वो बहुत सुनहरा है एंड इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में बहुत स्कोप है अभी ग्रोथ का। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स डैश अंटिल फेब 2025। तो येलो पीस का जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया है फरवरी 2025 तक, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा फॉर लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 2 लाख करोड़ रुपीस। तो इनमें से अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही रहेंगे। ए कह रहा है पीएम ने ले किया फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस रेलवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ 19,500 करोड़ रुपीस ओडिशा में। नहीं, ओडिशा में नहीं, आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू उजाला स्कीम एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम एज ऑफ जनवरी 2025। अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किस एडिशन ने ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसको रिलीज किया गया, तो ये 8वां एडिशन यहाँ पे रिलीज किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा, राइट, इन पूसा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, एक और चीज यहाँ पे पीयूष गोयल जी के द्वारा ट्रेस नेट 2.0 भी लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक अपग्रेडेड ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जिससे आपके रेगुलेटरी ऑवरसाइट में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्पावर, राइट। ये क्या है एम्पावर? मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस लॉन्च किया गया ताकि जो एजुकेशन क्वालिटी है मेघालय में उसको बढ़ावा मिल सके। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये एम्पावर मेघालय स्टेट में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया 21.28 बिलियन रुपीस का लोन फॉर जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ताकि इंप्लीमेंट किए जा सके स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस यूपी। तो किसके द्वारा ये लाया गया है? ये लाया गया है IREDA के द्वारा ये स्मार्ट मीटर्स। एंड यहीं पर हम देखेंगे 10 ईयर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा विद वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर दीज स्मार्ट मीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलेटिक्स कमीशन। तो PT उषा नहीं, सॉरी आई करेक्ट, ये है अंजू बॉबी जॉर्ज जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलेटिक्स कमीशन। नेक्स्ट, छठा एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डैश जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर डेवलप किया गया था उसको डिलीवर किया गया बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड टू द इंडियन नेवी 9 जनवरी को। उसका नाम पूछा जा रहा है तो वो है INS बख्शीर। नेक्स्ट, नेशनल फिल्म अवार्डी P जयाचंद्रन, इनको रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये काफ़ी फेमस क्या थे? सिंगर थे। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस जिसको NRI डे के नाम से भी जानते हैं 2 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है, 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। हु प्रेजेंटेड द प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड्स, राइट, जो कि हाईएस्ट ऑनर है ओवरसीज इंडियंस के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जैसे हमने देखा 2 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है 9 जनवरी को। ये ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 1915 में जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे तो उनको ऑनर करने के लिए, राइट, उसको रिकॉग्निशन करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड जो वो चेंजेस लाए बाहर से इंडिया में उसको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने लॉन्च किए 2 नई स्कीम BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज अ पार्ट ऑफ देयर न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं 2 फंड्स को? ये लॉन्च किया गया है DSP एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रो निफ्टी इंडियन डैश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडेक्स फंड एंड ETF को। तो ये रेलवे सेक्टर से रिलेटेड लॉन्च किया गया है। जो भी कंपनीज रेलवे से रिलेटेड हैं चाहे वो उनके प्रोडक्शन के लिए हो, फ्यूल के लिए हो, उसमें ऐड की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनडेसा। अनडेसा क्या है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, राइट। इनके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025। इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन B एंड ऑप्शन C सही है।
ए कह रहा है कि इंडिया की जो फॉरकास्ट है इकोनॉमी का टू ग्रो बाय 6.8% 2025 में, नहीं तो 6.8% तो 2024 में था। अगर मैं 2025 की बात करूँ, प्रोजेक्टेड है वी विल बी ग्रोइंग बिटवीन 5.7 to 6%, एंड 2026 की मैं बात करूँ तो 5.6% तक की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन की जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच बीचेज इन केरला वर रिसेंटली अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो वो है कप्पड़ एंड छल बीचेस, राइट। एंड ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने एरिया में जो मैरिटाइम इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। आप अपने वहाँ के बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। एंड इससे क्या होगा, आपके जो एरिया है वो साफ रहेगा और जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसेंटली अज्यूम द ऑफिस एज 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो वो कौन रहेंगे, वो हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, वो कौन रहेंगे, वो हैं आपके निकोलस मादुरो मोरोस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, वो है जोसेफ खलील ऑन, राइट। ये सक्सीड करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट माइकल नेम ऑन को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया कोरिया बेस्ड SII कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा दे सके कोरिया को। तो ये पिक्सल है, साउथ बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया एंड इवन ये अपनी खुद का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च कर रहे हैं, फायरफ्लाइज कॉन्स्टलेशन, जिसमें 6 सैटेलाइट्स यहाँ पे रहेंगी एंड ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट में काफ़ी माहिर है। ये यहाँ पे हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा सप्लाई करेंगे साउथ कोरिया को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, होमवर्क पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो के नए चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं, नाम बताओ एंड नंबर बताओ, वो कौन से नंबर के चीफ रहेंगे इसरो के। देन इसके बाद बताओ किनको BCCI का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है एंड BCCI का ट्रेजरर कौन अपॉइंट किए गए हैं, इन दोनों का नाम बताओ और ये दोनों किनको सक्सीड करेंगे वो भी नाम बताओ। फिर इसके साथ बताओ कौन सा एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस अभी हमने ऑब्जर्व किया, कब ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी डेट बताओ, डे का डेट बताओ एंड क्यों ऑब्जर्व किया जाता है वो बताओ, राइट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मैक्स टू मैक्स लाइक चाहिए मुझे आज की वीडियो में एंड मैक्स टू मैक्स कमेंट चाहिए। जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी बच्चे होमवर्क क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करा करो। बहुत अच्छा सेशन हम डेली बेसिस पे लेते हैं, सारी न्यूज़ हम डेली बेसिस की कवर करते हैं जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके।